गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बिम्स्टेक। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की रिसेंटली अभी बैंकॉक में हुई है। बिम्स्टेक एक इकोनॉमिक ब्लॉक है। 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसको बनाया गया था। इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करने के लिए इसको बनाया गया है। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। पहले जब ये बनाया गया था तब तो सिर्फ 4 कंट्रीज़ द्वारा बनाया गया था, तभी इसका नाम बिस्टेक था। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। और जब म्यांमार ने 1997 में ही इसको ज्वाइन किया तब इसका नाम बिम्स्टेक हो गया, ठीक है। लेकिन जो इसका करंट नाम है बिम्स्टेक वो तब बना जब 2004 में नेपाल और भूटान ने इसको ज्वाइन किया 6th मिनिस्टीरियल मीटिंग में। अब अगर हम इश्यूज़ देखें इसमें तो डॉर्मेंसी रही है। शुरू में तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं रहा कंट्रीज़ का, सार्क के ऊपर ही फोकस रखते रहे। लेकिन जब धीरे धीरे जो है पाकिस्तान ने सार्क की प्रोग्रेस को स्टॉल करना शुरू किया तब जो है मेंबर कंट्रीज़ का फोकस बिम्स्टेक की तरफ आया, ठीक है। बिम्स्टेक का अभी तक जो है कोई ऑफिशियल हेड ऑफिस भी नहीं था शुरुआत में। तो लेकिन जब फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ बैंकॉक ने कहा कि ऑफ कोर्स ढाका में जो है 2011 में उसको हेडक्वार्टर दिया गया। जब थाई फॉरेन मिनिस्ट्री तक शुरुआत में थाई फॉरेन मिनिस्ट्री में मीटिंग होती थी, लेकिन बाद में जब 2011 में ढाका में इसको हेडक्वार्टर्स दिया गया। अब 2018 में इंडिया जो है वो शुरू से पुश कर रहा है कि एक FTA साइन किया जाना चाहिए बिम्स्टेक कंट्रीज़ में, लेकिन इंडिया और थाईलैंड के कुछ मार्केट एक्सेस के कुछ इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से जो है नहीं साइन हो पाया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सोशल इश्यूज और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने एक सेकंड जो हमारा सेकंड एडिशन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, वो पब्लिश किया है अभी रिसेंटली। तो ऑफ कोर्स ये सब हमारा फोकस हमारा किसके ऊपर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, जो कि हमारी यूनिवर्सल एस्पिरेशन है। एट द कोर जो है हमारा SDG टारगेट 1.2 है, जो कि कहता है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, लगभग हर फॉर्म में उसको हाफ तक ले जाना है 2030 के लेवल 2030 तक। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ? मतलब आपको पता है कि जो पुअर लोग हैं वो कई तरह की डिसएडवांटेजेस से सफ़र करते हैं, सिर्फ पैसे की कमी ही नहीं होती है। तो अगर हम उसको मेजर करें तो मतलब एजुकेशन की भी उनके पास दिक्कत है, फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उनके पास प्रॉब्लम है। तो इस सबको हम मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में हम पॉवर्टी को मेजर करेंगे। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? तो आपको पता है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो जो है UNDP भी यूज़ करता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनाई जाती है 2010 की, उसमें भी उसको यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो है नीति आयोग ने भी जो है जब पहला एडिशन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जब रिलीज़ किया 2021 में, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को इंडिया की नेशनल प्रायोरिटीज़ के ऊपर टेलर मेड कर दिया। अब इन डेप्थ एनालिसिस देता है ये जो है कि कितनी हमारी कंट्री में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी चल रही है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब इसमें डेटा कहाँ से लिया जाता है? डेटा इसमें लिया जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। अगर हम देखें कि क्या पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, तो एक मेथडोलॉजी है एल्कायर फॉस्टर, उसमें 3 जो है डायमेंशंस पर इक्वल वेटेज दी गई है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। और वेट्स जो है वो हर इंडिकेटर को जो है वो ऐड किए जाते हैं और कंपोजिट मैट्रिक तैयार किया जाता है। अगर हम फाइंडिंग्स देखें जो अभी 2023 की जो हमारे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो ये रिपोर्ट जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर जो है बेस्ड है। इसमें कहा गया है, जो रिसेंट आया था अभी ऑफ कोर्स, इसमें कहा गया है कि लगभग 13.5 करोड़ लोग जो है वो पॉवर्टी को एग्जिट कर चुके हैं पिछले 5 साल में। रूरल एरियाज़ में सबसे तेज़ी से रिडक्शन देखी गई है और सबसे ज़्यादा इंडिया में रिडक्शन देखी गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 3.43 करोड़ जो लोग हैं वो पिछले 5 साल में पॉवर्टी को जो है वो एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि लगभग 24 के आसपास जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं जो 1.44 लाख हाउसेज जिनको एलोकेट किए जाने थे और उसके फंड्स एलोकेट किए जाने थे, क्योंकि वो ऑफ कोर्स जो है बता नहीं पाई सैंक्शन नहीं कर पाई उन हाउसेस को जून 30 तक। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उत्तर प्रदेश जो है उन्होंने एडिशनल एलोकेशन मांगी है, तो ऑफ कोर्स वो जो बाकी स्टेट्स हैं उन्होंने तो किया ही नहीं एलोकेट जून 30 तक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि फ़ंड्स को लैप्स होने के बजाय उन फंड्स को उत्तर प्रदेश को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है क्या? पहले तो आपको पता है इसको इंदिरा आवास योजना कहते थे 1996 की, लेकिन उसको जो है उसमें देखा गया कि उसमें तो बहुत गैप्स थे, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, लो क्वालिटी हाउसेस बनाए जा रहे थे, मॉनिटरिंग भी सही नहीं थी। सीएजी ने ही जो है वो गैप्स आइडेंटिफाई करके 2014 में रिपोर्ट दी थी। फिर 2016 में गवर्नमेंट ने हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट रखा हुआ था 2022 तक सबको घर देने का। तो 1 अप्रैल 2016 में ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें एक पक्का हाउस दिया जाना है और जिसमें बेसिक एमेनिटीज़ हों, और हाउसलेस हाउस होल्डर्स को जो है ये जो कच्चा हाउस में रह रहे थे उनको जो है ये पक्का हाउस 2022 तक दिया जाने वाला था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 2.93 करोड़ हाउसेस जो है वो 2023 तक जो है वो दे दिए गए हैं रादर, और 2.90 करोड़ जो है वो सैंक्शन भी हो चुके हैं, जिसमें से 2.31 करोड़ जो है वो कंप्लीट बन चुके हैं। अब अगर हम फीचर्स देखें इस स्कीम के, तो मिनिमम साइज़ जो है हाउस का वो लगभग 25 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए 70,000 से पहले सब्सिडी देती थी जो घर बनाने के, उसको बढ़ाकर लगभग 1.2 लाख कर दिया गया प्लेन स्टेट्स में, और जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में उसमें 75,000 रुपये पर हाउस की बजाय 1.30 लाख रुपीज़ की सब्सिडी दे दी गई। मतलब जो 90 और 10% के रेशियो में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स के लिए भी असिस्टेंस दी जाती है, और पाइप ड्रिंकिंग वाटर की भी जो है वो जो आपका जल शक्ति योजना है, जल शक्ति मिशन है, उसको भी इसके साथ ही कन्वर्ज कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, ये सारी जो गवर्नमेंट की बाकी की स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ज करके इसके साथ ही मिला दिया गया है। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया कि उत्तर प्रदेश को जो है ये शेयर जो है बाकी स्टेट्स का या यूटीज़ का दे दिया गया? सेंटर ने एक्चुअली टारगेट रखा था कि मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ घर हम बनाएंगे। 2.04 करोड़ जो है वो आइडेंटिफाई किए गए सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस द्वारा। बाकी के 91 लाख हाउसेज जो है वो एक सर्वे के थ्रू जो है वो एलोकेट करे जाने थे, जिसको हम आवास प्लस सर्वे कहते हैं। तो ये स्टेट्स जो यूटीज़ हैं, जो बाकी की जिनके हाउस जो है वो उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं, उन्होंने तो जो है ये सर्वे के बेसिस पर सैंक्शन करना जो है लगभग 1.5 लाख के करीब जो हाउसेज वो सैंक्शन ही नहीं कर पाए विद इन दैट टाइम डेडलाइन। तो इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश ने नॉट जस्ट कि उन्होंने अपने लगभग 35 लाख घर बना दिए, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें और एडिशनल हाउसेज के लिए भी आप अप्रूवल दे दो। ठीक है। तो यूपी ने जो है 29.82 लाख हाउसेज जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के भी जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। अब जो बाकी के 1.44 लाख, जो लगभग 1.5 लाख के करीब हाउसेज हैं जो बाकी स्टेट्स नहीं सैंक्शन कर पाई थी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो भी अब जो है वो उत्तर प्रदेश को दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है उन्होंने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर उसको इम्प्लीमेंट किया है, जो कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स जो है अलाउ करती है फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। अब ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है क्या? ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स अलाउ करती है फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड अगर कोई भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, तो मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो भी आप ड्यूटी देते हो, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो भी आप दे रहे हो वो आपको रीइंबर्स कर दी जाती है। ठीक है। तो लेकिन अगर इन गुड्स को आप ऐसा नहीं कि आप उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचो, आपको उसको एक्सपोर्ट ही करना है। तो ये एडवांस ऑथराइजेशन जो है वो 12 महीने के लिए वैलिड होती है, और ये किसी भी मैन्युफैक्चरर को, एक्सपोर्टर को जो है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर जो कि किसी सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के साथ जो है एसोसिएटेड है, उसको ये स्कीम के बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन सिर्फ फिजिकल इंपोर्ट्स, इंटरमीडिएट सप्लाई या सप्लाई जो कि डीम्ड एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड है, उन्हीं गुड्स को जो है ये जो है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलता है। तो उनको ऑफ कोर्स ये एग्जाम्प्ट कर दिए जाती हैं क्वेस्टिक कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस एक्सेट्रा, क्योंकि ये सब वो प्रोडक्ट इंडिया में तो नहीं बेच रहे हैं, वो तो उसको बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट को हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग जो है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है वो इनाग्रेट किया है। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो, जिसको हम पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट भी कहते हैं, ये कस्टम्स एयरपोर्ट है साउथ ऑफ पोर्ट ब्लेयर में। मेन एयरपोर्ट है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का। वैसे तो ये एक सिविल एयरपोर्ट है, लेकिन इसकी फैसिलिटीज़ जो है इंडियन नेवी के साथ शेयर की जाती हैं। ठीक है। जो इसका ट्रैफिक है वो
एक्चुअली इंडियन नेवी ही हैंडल करती है। अब वीर सावरकर जी के बारे में देखें अगर हम तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो 1857 की जो म्यूटनी थी वो एक्चुअली फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस थी। उन्होंने एक बुक भी लिखी, हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वो हिंदू महासभा पॉलिटिकल पार्टी के भी प्रेसिडेंट रहे और वो क्विट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने अपोज किया था। उन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड की थी उनका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने रिसेंटली कहा है कि एग्रीमेंट जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के, जो कि कॉर्पोरेट इंडिया ने साइन किए हैं पिछले क्वार्टर में, अप्रैल से जून के पीरियड में, वो 3 गुना हो चुके हैं अगर हम उसको पिछले साल से कंपेयर करें तो। मतलब इतना ज़्यादा जो है वो कॉर्पोरेट इंडिया एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं? जो कि हमारी इंडियन कंपनीज फॉरेन सोर्सेज से बोरो करती हैं फंड्स अपने एक्सपेंशन करने के लिए, कोई एसेट एक्वायर करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए डेट की, किसी भी चीज़ के लिए जो है वो पर्पस पे वो जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर सकती हैं। कहाँ से की जाती हैं? ये किसी फॉरेन बैंक से की जा सकती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से की जा सकती है, इवन इंडियन कंपनीज़ की अगर कोई फॉरेन सब्सिडरीज हैं उससे भी बोरो किया जा सकता है। और ये पैसा सिर्फ ऐसा ही नहीं कि फॉरेन करेंसी ही जो है उसमें बोरो किया जाता है, रुपी डिनोमिनेटेड लोन्स में भी बोरो किया जा सकता है। इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट ओवरसाइट रहती है आरबीआई की, ठीक है। कंपनीज जो है वो कुछ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं तभी वो ईसीबी को एक्सेस ले सकती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटी मोटी कंपनी जो है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सके। अब इसके बेनिफिट ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में फंड्स जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बाहर से बोरो कर सको। और जनरली जो ये लोन लिया जाते हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म के होते हैं और इसमें इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक फंड्स। लेकिन रिस्क भी रहते हैं, एक्सचेंज रेट का रिस्क। अगर फ्लक्चुएशन आ रही है इंडियन रुपी में तो आपने जो लोन लिया है बाहर से वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का बढ़ जाएगा। सोवरेन रिस्क भी हो सकते हैं। अगर समझ लो कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट अपनी डेट को जो है पे करने में फेल हो जाती है तो ऑफ कोर्स उससे क्रेडिट वर्दिनेस जो है फॉरेन लेंडर्स की कम हो जाएगी, तो आपके ऊपर सोवरेन रिस्क आ जाएगा, ठीक है। क्रेडिट रिस्क भी होता है। आपकी जो ईसीबी है, फॉरेन लेंडर्स कई बार क्या होता है कि वो डोमेस्टिक लेंडर्स की तरह जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं, तो उस केसेस में जो है आपको क्रेडिट रिस्क के भी प्रॉब्लम रह सकती है। रेगुलेटरी रिस्क भी, कभी कभी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, वो कोई चेंज हो सकती हैं कभी भी विद रिस्पेक्ट टू ईसीबी, तो आपकी ऑफ कोर्स जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फोर्स मेजोर। तो ये टॉपिक आपका इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि ओएनजीसी की विदेश लिमिटेड की जो एक्सप्लोरेशन ब्लॉक है इराक में, जो कि साल 2003 से बंद पड़ी है, मतलब सस्पेंडेड पड़ी है, उस क्योंकि हमने फोर्स मेजोर क्लॉज का इस्तेमाल किया था, उसको शुरू कर लिया जाए दोबारा से। तो ये फोर्स मेजोर होता क्या है? एक्चुअली ये एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर फोर्स। इसका अगर हम सिंपल भाषा में मतलब समझें तो मतलब कि ऐसा कोई एक्ट, या इसको हम एक्चुअल में तो ये कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया इसलिए जो हम मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने कहा था मुझे कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ आ जाएगा। आपने मुझे कहा था कि एक मुझे घर बना कर दो और 1 साल के अंदर ये घर बना के आपको देना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हम दोनों के बीच में। आपने मुझे कहा कि 1 साल के अंदर घर बनाना है, लेकिन समझ लो 6 महीने के बाद, जब मैं घर बना रहा था एज अ कॉन्ट्रैक्टर, 6 महीने के बाद जो है कोई वॉर हो गई या राइट्स हो गए, क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, समझ लो कोरोना आ गया, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो कोरोना है। तो मैं क्या कहूँगा कि फोर्स मेजोर का क्लॉज का जो है वो इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा कि मैं 1 साल के अंदर अब ये घर नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसी एक इवेंट हो गई है जो मेरे हाथ में नहीं थी, भगवान ने कर दिया, एक्ट ऑफ गॉड है। तो मैं वो 1 साल के अंदर अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी जो है वो नहीं पूरी निभा सकूँगा। और अगर मैंने फोर्स मेजोर क्लॉज जो है वो इन्वोक कर दिया है, ऑफ कोर्स जो है कोर्ट्स या फिर जो जुडिशरी है या फिर जो आर्बिट्रेशन में अगर आप मेरे खिलाफ जाते हो कि इसने 1 साल में घर क्यों नहीं बना के दिया, तो कोर्ट्स जो है वो ये देखेंगे कि एक्चुअली ये फोर्स जो है एक्ट ऑफ गॉड है या नहीं। जैसे कोरोना था तो ऑफ कोर्स इवन गवर्नमेंट्स तक ने भी जो है फोर्स मेजोर क्लॉज जो है वो इन्वोक किया था कि हम ये चीज़ नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया जो हमारे हाथ में नहीं है, अदरवाइज़ हम तो करना चाहते थे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा, ठीक है। तो ऐसे ही साल 2003 में जब इराक में यूएस का अटैक हुआ था, तब जो है इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्स मेजोर क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए इस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक को, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को जो है वो वहाँ पर ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए थे।
तो इंडियन किसी भी लॉ में इसको कंट्रैक्चुअल या जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है। इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जो है, जो उसमें सेक्शन 32 क्या कहता है कि कोई जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसी एक इवेंट के ऊपर जो है वो कंटिंजेंट है, मतलब डिपेंडेंट है, जो कि जिसको अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब इम्पॉसिबल है उसको अवॉइड करना, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया जा सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की जो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उससे पीछे हटा जा सकता है अगर कोई ऐसी इवेंट हो जाती है जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। अब कोरोना हो गया तो कोई आप उसको नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि भगवान ने किया है, वो एक्ट ऑफ गॉड मानते हैं उसको हम, ठीक है। तो उसमें तो किसी भी पार्टी की गलती नहीं है, किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। तो उस केस में जो है हम फोर्स मेजोर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट से हमको वो पीछे हटने का एक मौका देता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is BIMSTEC. This topic is important for your international relations. So recently the first ever foreign ministers meeting of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation was held in Bangkok, that is in Thailand. So BIMSTEC is an economic bloc which came into being on 6th June 1997 through the Bangkok Declaration. So the aim is to, of course, accelerate economic growth and social progress among the member states. It is headquartered in Dhaka, and it was initially, when it was formed in 1997, it was formed as BISTEC, Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation. But in the same year, Myanmar joined, then it was named as BIMSTEC. But the current name, the BIMSTEC, got in 2004 when Nepal and Bhutan also joined it at the 6th ministerial meeting. Okay, so since then it has made several progress, but there are still issues. Like it remained dormant in initial years because the FTA process was stalled, and countries like Malaysia, Singapore and Indonesia, they have not been involved even as dialogue partners in BIMSTEC. But this issue of dormancy, BIMSTEC did not even have an official headquarter or official head office, and the meetings were held in Thai Foreign Office until 2011 when it got an official headquarter in Dhaka. Okay, so since 2018, India is aggressively pushing for an FTA, that is a free trade agreement, but there are issues between India and Thailand with respect to market access. That's why the progress regarding this FTA has been stalled. So the next topic is National Multidimensional Poverty Index. This topic is important for your governance and your social issues both. Niti Aayog has recently published the second edition of Multidimensional Poverty Index, and this is a part of Sustainable Development Goal, especially the Goal 1.2, which aims to reduce poverty and in all its forms by at least half by 2030. So what is the meaning of the term multidimensional poverty? So you know that a person who is poor, he or she is not suffering from just lack of resources, but he may be suffering from multiple disadvantages at the same time. For example, they may have poor health or malnutrition, lack of clean water, electricity, poor quality of work or little schooling. So basically this measure, this multidimensional poverty, basically captures the deprivations in education and access to basic infrastructure, in addition to just the concept of income. Okay, so what is National Multidimensional Poverty Index? This MPI has been used by UNDP in their flagship report or human development since 2010, and even the Niti Aayog had published the first edition of National Multidimensional Poverty Index for India in 2021. So basically this report is a tailored version of the MPI, and it is giving preference to intensity of multidimensional poverty at the national, state and district levels. Which data is taken care of while calculating it? So the data is taken from the National Family Health Survey. So there are certain parameters and methodology which are followed while preparing this index. So there is this method called Alkire-Foster methodology. So this index calculates the deprivation cutoffs for each indicator, especially the health, education and standard of living. All three of them are given equal weightage. So a composite metric is then prepared using these metrics. So what are the key findings of the National Multidimensional Poverty Index for 2023? So this report is based on the latest National Family Health Survey, which has been released for the years 2019 and 2021. So as per this report, 13.5 crore people have exited poverty in the last 5 years in India. Rural areas have shown a
a faster reduction in their MPI value, and especially the state of Uttar Pradesh, in the last 5 years, 3.43 crore people have escaped poverty, and this is the largest decline among the 36 states and union territories of India. Okay, so the next topic is Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen. This topic is important for your governance section. Central government has recently withdrawn the allocation of 1.44 lakh houses from about two dozen states and UTs because they failed to sanction the houses by the deadline, that is June 30th. And these houses have been given to Uttar Pradesh as additional allocation. So what is Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen? Of course, initially it was called an Indira Awas Yojana and it was launched in 1996. But a CAG report in 2014 identified many gaps like lack of transparency in selection of beneficiaries, low quality of houses, weak monitoring. So that's why the government, instead of continuing that scheme, they brought this new Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen in 2016 because they had a mission of housing for all by 2022. So this scheme aims to provide Pakka house with basic amenities to all houseless householders, and those who are especially living in Kacha and dilapidated houses by 2022. So according to the data, center's allocation of 2.93 crore houses till 17 July 2023, out of these allocations, 2.9 crore have already been sanctioned, out of which 2.31 crores have been completed already. Okay, so because we had this period of corona, otherwise the target of 2.90 crore houses would have been completed by 2022 itself. Okay, so what are the salient features of this scheme? So minimum size of the house shall be 25 square kilometer. The unit assistance per house has been increased from 70,000 rupees to 1.2 lakh in plain states, and from 75,000 to 1.3 lakh in northeastern and Himalayan states. So assistance is also given for construction of toilets. And the greatest things that I have felt for this scheme is that government has smartly converge several other schemes like pipe water, drinking water supply, electricity connection, LPG gas connection, etc., which are currently being given under different government programs. They are also converged under with this Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen, so that at one time only, in one time only, all these benefits are given to the beneficiaries at once. Okay, so why is this share of other states being given to Uttar Pradesh? You know that center has a target of 2.95 crore houses by March 2024. Okay, initially this target was 2022, but because of corona, this was shifted 2 years. This was extended by 2 years. So 2.04 crore had to be identified from the socio-economic caste census data, but the 91 lakh houses were to be allocated based on a survey which was Awas Plus survey. So several states and UTs, they failed to sanction a total of 1.44 lakh houses within the deadline of June 30th. Instead, the state of Uttar Pradesh, which was initially allocated 34.72 lakh houses, they rather had sought approval for additional houses. So they were much ahead of the other states in the state of Uttar Pradesh was much ahead of other states in not just construction of houses, but identification of beneficiaries and sanctioning of those houses. UP had already completed construction of 29.82 lakh houses, while the remaining are also under construction. That's why the states which have even failed to sanction those houses have been given. So they have the sanction of those houses have been taken away from them, and now it is being allocated to the state of UP. So the next topic is Advance Authorization Scheme. This topic is important for your economy section. Recently, Directorate General of Foreign Trade implemented the Advance Authorization Scheme under the Foreign Trade Policy, which allows duty-free import of inputs and for export purposes. So it is basically a duty-free import of inputs which you are importing, but you are going to use it in making a product which will be ultimately exported. For example, you are importing, let's say, an electronic item. Let's say you are importing a semiconductor, but you are importing. So because you are importing, you have to pay basic custom duty and all those duties. But if you are using it
to make, let's suppose, a mobile phone or a computer, which will ultimately be exported. So at that, for that, of course, you will be given the exemption from these duties. Okay, so you are not going to be allowed to sell those products or those laptops or mobile phones in the domestic market, and this advance authorization is valid for 12 months, which of course needs constant renewal. And any manufacturer which is exporting those items directly, or if there is a merchant exporter who is tied with supporting manufacturer, and they are making some physical exports, they are eligible to get these benefits. Okay, so these inputs which are being imported will be exempt from several duties like basic custom duty, additional custom duty, etc. So the next topic is Veer Savarkar International Airport. This topic is important for our economy section. So PM Modi has recently inaugurated the new integrated terminal building of Veer Savarkar International Airport, Port Blair, via video conferencing. So this is also known as the Port Blair Airport, and it's a customs airport which is located south of Port Blair. It is the main airport of the Andaman and Nicobar Islands of India. It's a civil airport, and its facilities are shared with the Indian Navy. Okay, so of course, the traffic at this airport is also handled by the Indian Navy. If we look at about Veer Savarkarji, so he was born in 1883, and he was the first to acknowledge the mutiny of 1857 as the first struggle of independence, and he wrote the book called The History of War of Indian Independence. So he was also the first he was also the president of Hindu Mahasabha political party, and he opposed the Quit India movement in 1942. So he also founded organizations like Abhinav Bharat Society and Free India Society. So the next topic is external commercial borrowings. This topic is important for your economy section. RBI has recently said that agreements for external commercial borrowings, which are signed by corporate India, has jumped to a massive $12 billion in the April-June quarter of this year, which is 3 times the level which was 1 year ago. Okay, so what are these external commercial borrowings? So these are basically borrowings of funds by Indian companies from foreign sources, and they can be used for any purpose, like if they want to expand their business, acquire new assets, or if they want to repay their existing debt. They can borrow this money from foreign banks, international financial institutions, and even foreign subsidiaries of Indian companies. It can be in the form of rupee denominated loans, and also foreign currency denominated loans. Because of course, foreign borrowings, of course, there is strict regulatory oversight by the RBI. Companies who meet certain eligibility criteria, only they can borrow this external commercial borrowings, and not every company. So what are the benefits of this ECBs? Of course, they allow you the opportunity to borrow large volume of funds for a relatively longer period of time, and also the interest rates are lower as compared to domestic funds. But there are risks also. There are exchange rate risk. If the rupee starts falling because of volatility in the currency markets, then of course your cost of funds would increase. You would have to pay more rupee in form of your loan repayment. There is also sovereign risk in case the foreign lending government fails, or because of that, then of course there would be inflation. There would be several issues, including the volatility in the currency market. Then of course you are prone to sovereign risk also. There is also credit risk. In this sovereign risk, there is also a chance, or there is also a possibility. Let's suppose that Indian government fails to entertain its debt, or fails to repay its debt, then Indian rupee would fall sharply. In that case, of course, there would be currency market fluctuations, and you would be forced to pay much more than you would have borrowed. There is also credit risk. ECB exposes company to credit risk because foreign lenders may not have the same level of protection as domestic lenders in the event of a default. That's why you are given, or you are prone to more credit securities. You have to give more securities because you are not because the foreign lenders may not trust you. There is also regulatory risk because government of India may change the ECB guidelines time and again. Then it would affect the availability and cost of borrowing for you. Okay, so the next topic is force majeure. This topic is again important for our economy section. So central government is considering that they would resume operations at the ONGC Videsh Limited's exploration block in Iraq, which is under
force majeure since 2003. So force majeure is a French term which literally means greater force. It is a concept which says that an extraordinary event has happened. That's why the legal obligation between two or more contractual parties is impossible to fulfill. Like I was telling you earlier in Hindi language, that let's take an example that you and me both have entered into a contract, and I am a contractor, I am a construction, I'm a contractor, and you have said that we have entered into a contract that I will be building your house in 1 year, and I was making your house. After 6 months, let's suppose that a war, a riot, criminal activity, or the most perfect example is Corona. Okay, so Corona came, then of course the lockdown happened. This is an act of God. I had no control over it. I tried everything, but I could not control it. So there is an act of God, which is beyond the ability of beyond my ability to control. So what would I would say that I would not be able to fulfill the contractual liability of 1 year, because an act of God has occurred, and now I would be suspending the suspending the conditions of the contract. Okay, and this force majeure may not have been defined in our Indian statutes, but it has been indirectly defined in Indian Contract Act of 1872, which says that a contract is contingent on the happening of an event, which if becomes impossible, then the contract would become void. Okay, this is also an act of God. Let's suppose that a war happens. No, neither me nor you had a control over it. Then in that case also I would be able to say that because this war has happened, that's why I would not be able to fulfill the contractual obligation that I had with you for making this house in 1 year. I would not be able to do it anymore. Okay, so when Corona came, even the government of India, especially the Indian Railways, invoked the force majeure clauses in several of the contracts, and it was held legal by even the Supreme Court. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.